बताएं। पैसों के लिए। I'm joking. साथ में काम कर रहे थे इस तरह के प्रोजेक्ट में, फर्स्ट वेब शो टुगेदर. So it was nice क्योंकि I think he wanted to protect me as a father, but at the same time then he realized and he was telling mummy the other day कि ये थोड़ा काम जानती है. Something that everybody accepts is the toughest to do. It's the most toughest form of whatever, but उसको प्यार बहुत मिलता है, रिस्पेक्ट कम मिलती है. कि कॉमेडी एक्टर्स को हमेशा कॉमेडियंस ही देखा जाता है, बट वो वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है. मेरी तरफ से पॉपकॉर्न अवार्ड 5 किलो सिला हुआ पॉपकॉर्न. What's an award? It's a validation of your work, right? Hello everyone. I am very excited because I already watched half of the show. And I respect everybody, but I have to tell you, यार तुम तो गोविंदा निकले. Like because what happened that I have never imagined you are gonna perform such a character where probably your director must have told you कि तू just go OTT. The show is going to OTT. Just go OTT. Just go OTT. By God, मतलब I genuinely enjoyed the show after a long time. A comedy, clean comedy, and I really enjoyed it. Thank you so much. Genuinely, I loved it. But it is. I have to say, this is like one of the biggest compliments that I've got, because I think Govinda is by far like a supreme actor who I love and adore. And so, like, even for you to say that means a lot to me. Thank you. Wow. Yeah, but I want to know. I want to know this from every one of you that ये एक सवाल जो है बहुत ही वाहियात सवाल है ना, और उसका आंसर जो है वो स्टार्ट होता है जब वो छोटा था, like your character when he was small and he was like friend का जो ऐसे था उसको बाप का ऐसे बना के like I have lot of friends, instead of saying that I have lot of baap, lot of fathers, and then blah blah blah, and then the journey. How interesting that idea was, and what was the first reaction when you guys got to know कि okay, so this is the core idea of the character? So for me, it was I had a broken leg after I heard the script because I fell from the chair. उसमें पैसे वैसे खर्च हुए थे मेरे. And वो उसूल कर लिए आप इस किरदार करने के दौरान शो के दौरान? हाँ, वो मैंने बढ़ा के पहले से ले लिए थे Disney Plus Hotstar से. No, it was great fun. So I'll quickly tell my side. This kind of a comedy, which I really love watching, and I am a great fan of people who can pull off this fast-paced, slightly going borderlining on slapstick and punching, the punchlines and all of that. I have not done much in that kind of work. I have not done. So when Farhad came, I told him, I said, this is not my cup of tea. But after I heard the script, I laughed so much, and I actually fell from the chair. That was a joke that I broke my leg, but I actually fell from my chair, and I said that I'm definitely doing it. Wow. And I had great fun. So, हालांकि यहाँ सब आपको बार-बार बताएंगे कि फहद की नरेशन में इतना मजा आता है, बहुत मजा आता है उसकी नरेशन में. But truly speaking, मुझे काम करने में उससे भी ज्यादा मजा. क्या बात. हमें भी बहुत मजा आया. Absolutely. और आपका वो जो हार्ट अटैक डांस था, you're not supposed to say what it is. Don't. Beep करो. Dance. Oh, sorry. Yeah, dance. I am super excited. जो heartfelt dance था. Heartfelt dance. Yeah, but tell me, what was your reaction like? Super. अरे सवाल ही नहीं पैदा होता. इतना ज़्यादा डांस करने को तो मैं इससे पहले कभी देखा ही नहीं है आपने. I think this is the first time you dance so well and so much. नहीं मजबूरी है, करना पड़ता है. मजबूरी से करना पड़ता है. इनकी लिखावट, इनका ये हमसे जो निकलवाते ना, हम मजबूर हो जाते हैं नाचने के लिए, है ना. तो ये हमारे फरहद भाई ये करवाते हैं, इस पर कोई शक नहीं. पूरा मतलब क्रेडिट जाता है इनको, फरहद भाई को. वो उनका लिखा हुआ इतना अच्छा होता है, सिचुएशनल कॉमेडी होती है, और आर्टिस्टों को मजा. जैसे इन्होंने कहा बहुत बड़ी बात है, तो बहुत ही कम करते हैं. गिने चुने फिल्में इन्होंने की है, मतलब देता नहीं है कोई सर, तो लेकिन करनी पड़ती. सॉलिड काम करते हैं.
नहीं कहा कि यार कितनी बात है। और इन्होंने जो भी फिल्म में काम किया, रोल्स जो भी है, कैरेक्टर याद रखने वाली चीजें हैं। डेफिनेटली, मुझे तो तो कोई शक नहीं। डायलॉग्स भी याद तो रहता है। इनके मुंह से तारीफ सुन के और मजा आता है। हाँ, क्योंकि फरहत भाई की हम तारीफ कर ही रहे हैं, तो जब ये कर रहे तो मेरे को वाकई अच्छा लगा कि भाई हाँ भाई सही बोल रहे हैं। He is a script तो writer वो himself हमको also, आर्टिस्टों से निकलवाने वाला कोई तो चाहिए यार। और ये स्क्रिप्ट सही हो ना, स्क्रिप्ट, हाँ वो मेन थिंग है ना। फाउंडेशन अगर मजबूत है तो बिल्डिंग खड़ी होगी ना। बिल्कुल। तो हम लोग है गैलरी पे खड़े हुए नाच रहे सब लोग। You know, you are playing a motivational speaker in the series, and yeah, but जहाँ तक again I'm so like itching, like, you know. पता नहीं क्या होता। but there you are like encouraging, like motivating to do some गलत चीजें ना also. What like what? Which one? अरे वही जो पहला वाला तेरी एंट्री वाला। अच्छा, that. हाँ, so that's what I'm saying. I want to know that what was your motivation behind doing the show? My motivation behind doing this show was, एक तो when I first heard the narration, Farhad sir is amazing, genuinely amazing. You have to listen to one narration of his. ऐसे लग रहा होता है पूरी मूवी चल रही है, आप एक एक चीज इमेजिन कर पाते हो। आंखों के सामने। He is damn good. वो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, पूरा गाना बीच में गाते हैं, धम धम, everything is happening with all with proper beats. कैमरा भी आ रहा है। So कैमरा, या ऐसे करके आएंगे. So it's like Zooming हो रहा है I ऐसा। could genuinely, मैंने 6 episodes की narration साथ में ली थी. Wow. And I could genuinely see what Pihu is. मैं imagine कर चुकी थी. मेरे 3-4 scenes इतने like so quirky they are. And for me, like I was sold on those scenes only. मुझे लग रहा था कि बहुत कुछ करने को मिल रहा है. You know, like थोड़ी बहुत ऐसी, मतलब ऐसा मुझे लगता है, मुझे लगा है अभी तक, मैंने मोस्टली जो बहुत सारी कॉमेडी फिल्म्स देखी हैं उनमें लड़कियों का रोल थोड़ा कम दिखाए मुझे, जो मैंने देखी हैं थोड़ी बहुत. एंड जब मैं ये सुनने जा रही थी तो आई फेल्ट ओके इट्स इन द सेम हाउसफुल स्पेस और प्रॉब्ली यू नो दिस स्पेस. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टार्ट कर रही हूँ अगर, तो आई वॉन्ट कि एक मीटी रोल हो. बिल्कुल, हाँ. And when I heard the entire thing, I was like, okay, she's throughout the journey, Yeah, and yeah. it's like they're wanting to get married, and And that's I the core love of the story actually. and I love the fact कि एक character का एक proper nuance है. Everyone has a different quirk adding to, like, what they're adding to the thing, and I really liked her no thing because like अभी आज मैं when I came here, like I was thinking कि कोई कुछ क्वेश्चन, कुछ उल्टा सीधा भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं नो कैसे कहूँगी, यू नो. बट आई मीन दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि कैरेक्टर वाइज एंड ऑल. सो आई थॉट कि अगर कुछ ऐसा कोई पूछेगा, अगर मैं जॉनी सर का कैरेक्टर अपनाऊंगी एंड आई जस्ट अटको फॉर 10 seconds. 10 seconds I'm like move to the next person. But yeah, all in all I really felt that उनकी नरेशन सुन के एंड एक एक कैरेक्टर का वो सुन के यू फील दैट ओके यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डाइव इनटू इट. Right. You know, I want to know this from you, like, you know, if you give us a little glimpse about your character, yeah. मेरा? Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछा नहीं व्हाई आई डिड दिस शो. बताएं. पैसों के लिए. आई एम जोकिंग. बट मेरे हिसाब से अगर कोई होली बुक है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, तो दैट फिल्म इज कॉल्ड अमर अकबर एंथनी. Absolutely. एंड दिस एंथनी गोंजाल्विस. एंड मेरा जो कैरेक्टर का नाम है उसका नाम है एंथनी कमजाल्विस, नॉट गोंजाल्विस, कमजाल्विस. सो यस, जब मुझे बताया गया आई एम प्लेइंग एंथनी कमजाल्विस, मैंने फरहाद भाई को बोला कि मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे ये रोल करने के लिए. वेरी गुड रोल. और हाँ, बाप बेटे की कहानी है. बहुत से बाप है इधर, बट वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे नुपुर बता रही थी, ऑल द फादर्स आर वेरी डिफरेंट, और कुणाल खेमू किसी भी बाप की तरह लगता नहीं है. तो वो भी गड़बड़ है. बिग प्रॉब्लम. डीएनए टेस्ट तो करना ही पड़ेगा इसका. यस, सो आई वाज क्वाइट इंस्पायर्ड. फरहाद भाई के साथ पहले काम कर चुका था मैं इन द हाउसफुल सीरीज, एंड यू नो, एंड ऑफ कोर्स विद जॉनी भाई, जेमी, सौरभ भाई. आई डिड अ हॉरर फिल्म विद हिम. I did a murder mystery with him, and I've done lots of films with Johny and Jamie. Nupur for the first time, but a great cocktail coming together, and fireworks.
Yeah. दिवाली कुछ जल्दी आने वाली है इस साल। मुझे लगता है। हाँ जी, आप भी गए। मुझे लगता है। होली दिवाली साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। You know, I last time when we were talking, right, that this is the show that you were talking about last Yeah, time, right? yeah. This is the one. How was it working with your dad? Because that time you were like, you know, Arundhati, बहुत मजा आया था. Only that line you told me. Yeah, Tell I me a couldn't little say more. much at that time. हाँ. But yeah, I mean, I think my realization working with my father was that बाप बाप होता है, you know, and I have so much more to learn and so much, you know, to कितना और मैं कर सकती हूँ ये सीखने मिला मुझे from everybody on set who I was sharing the screen with, Saurabh sir, Daddy, Chunky sir, Kunal bhai, Nupur, everybody. There was so much more to learn and it was a beautiful experience that we had together, me and Daddy. It was the first time जब हम लोग साथ में काम कर रहे थे इस तरह के प्रोजेक्ट में, फर्स्ट वेब शो टुगेदर. तो इट वाज नाइस क्योंकि आई थिंक ही वांटेड टू प्रोटेक्ट मी एज अ फादर, बट एट द सेम टाइम देन ही रियलाइज्ड एंड ही वाज टेलिंग मम्मी द अदर डे कि ये थोड़ा थोड़ा काम जानती है. You know, थोड़ा थोड़ा कर रही है, काम जानती है. So it was it's nice to know and he let me be and he let me do my thing. तो बहुत मजा आया and I'm happy that I got to do this. Because as an artist I was really hungry for something जहाँ पर मैं बहुत variety दिखा पाऊँ ना, अलग-अलग चीजें कर पाऊँ, and this is the show where I was able to do that. Yeah, it's comedy but still the characters are like different Yeah. character के अंदर भी character है. Yes, like that's yes, the thing yes. जो मुझे Yeah, बहुत that's अच्छा the लगा fun है. part with Rani's She's character. got so many characters, unbelievable. Yeah, उसके अंदर भी. Kunal, when it comes to you, right? How exciting and how exhausting it was at the same time, because इतना high energy performance है and the dance and everything. I was like, यार, I mean I understand कि probably एक दिन में तो इतना shoot नहीं हुआ होगा, but गाना even एक दिन then, में ही हुआ है। हाँ, गाना तो पूरा एक दिन पूरा में किया गाना है। एक दिन 7 घंटे में खत्म किया हुआ था। how you guys? But I'll tell you one thing, like when you're having fun doing what you do ना, you don't really feel so tired or exhausted. और अगर हो भी रहे ना तो इतना मजा आता है कि वो adrenaline में चला जाता है. अगले दिन पता, it's like a good workout. अगले दिन पता चलता है यार ये पिन्नियाँ दुख रही हैं या पैर दुख रहे हैं यार ये पूरा बैक में दर्द हो रहा है. But every single day on this set was lots of fun because एक तो वैसे ही you know you're in that fun space, then you're working with these actors who are just superb to be on set with. You know, Satish ji is missing, Rajpal bhai is missing, but when all of them are there together, तो जब set पे आप काम कर रहे हैं, improvisation कर रहे हैं, कट होते ही कहानियाँ शुरू हो जाती हैं. मतलब You know, they also meeting anecdotes, they are anecdotes. you know उस पिक्चर में ऐसा हुआ था, तो आपको भी इतनी सारी चीजें सुनने मिलती हैं, because all of them also as friends connecting after a long time maybe, you know, तो अरे वो याद है भाई हमने वो पिक्चर की थी, उसमें ये हुआ था, वो हुआ था, तो वो कहानियाँ चलती हैं, फिर आप आके सेट पे मजा करते हैं, तो पूरा दिन खत्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने काम किया, आपको ऐसा लगता है यार बड़ा मजा आया और इसके पैसे भी मिल रहे हैं. That's fun, but you know, this is, as I was talking about it, right? This is a clean comedy, and I want to know that because these days the kind of comedy happens, many times it's not the comedy that you can watch, like, you know, with the whole family. Most of the time those are the things that But are I think it's fair enough. No, there is a happening. big audience because सबको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलना चाहिए. And I'm not saying that when you say a non-clean comedy can be of different varieties, right? It's not necessarily vulgar comedy. There are certain comedies that I do not personally like, but there are people who like it. That's why people make it. So I think you just have to have the conviction to know what you're comfortable doing or not. Don't do what you don't want to do, and don't watch what you don't want to watch. As long as people are making within the parameters of whatever the CBFC rating is, and also your own moral sensibility, and you're not crossing that line, there'll always be films that are meant to be watched with your friends. Not all films are supposed to be watched with your parents or your kids. Absolutely, absolutely. And I think within that space, people are doing work, and again, within that also, not necessarily everything is good or bad. I'm sure, but you know what happened, that usually most of the content that we watch in the OTT space, some of them are really like super toxic, like, you know, I just felt it, right? That way, this is one of the shows that I felt like, you know, this can be watched, like, you know, ये TV पे भी release होती तो भी मतलब हम उतने ही मजे से देखते जैसे सारा भाई वैसे सारा भाई, like I'm just citing an example. Sure. But how, what do you think? Do you think that these are the kind of comedy that we need more, all the more? Because, I mean, comedy, this kind of comedy doesn't happen. Firstly, you need all of this talent to kind of come together to give you a comedy like that. But I think comedy is such a, it's the most palatable and the most easiest to watch. अगर आप भी आज घर पे है ना, आप कभी खाना खा रहे हैं, and if you want to choose,
99% of the times you'll go for something that is funny, lighter and easier. Even though, you know, as actors we want to do like intense stuff and all that, but even as actors when we go home and we watch stuff, no, if you want to watch something that's intense, तो आपको लगता है यार थोड़ा time निकालते हैं, थोड़ा मूड बनाते हैं, शाम को रात को आराम से 1-1.5 घंटा निकाल के इस माइंडसेट में आना पड़ेगा. बट कॉमेडी एक ऐसा है कि आप अभी भी 20 मिनट आपके पास आप कोई, यू नो, इवन द फिल्म्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, whether it's Golmaal or it's Houseful or it's Welcome, you can sometimes just watch 20 minutes of that film and then go live your life, come back and then watch 20 more minutes or watch that पहले का 20 minutes. मुझे याद है मैं बचपन में नमक हलाल की VHS थी, वो स्कूल से आता था, 1 घंटा होता था, वो देखता था, फिर देखता था, फिर आगे की खत्म होती थी, फिर रिवाइंड करता था, फिर लगा के देखता था. So like even films like हमें राही प्यार के, you can just watch them over and over and over again. Yeah. So I'm surprised कि अभी तक हम रुके थे, and I think this should open the floodgates towards OTT making comedy specific content. I'll be very happy because I love watching comedy and I just enjoy them so much. Like this one I enjoyed. I was just going through the Wikipedia pages, right? And so many veteran actors are sitting here. And There, she's pointing at you. Again. सर मैं ऐसे बात कर रही हूँ ना, देखो मैं ऐसे बात कर रही हूँ ना. Then he wants me to be the veteran. He's very young. We've had this He's just debate on debuted what his- veteran is. ये बेंजामिन बटन है, ये उल्टे चले. हाँ नो मैं क्यों ये बात बोल रही थी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैं विकिपीडिया में चेक कर रही थी, है ना, ऐसे रैंडमली ऑलमोस्ट, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि व्हेन इट कम्स टू अवार्ड्स, राइट, 3 of you especially, everybody love you. If audience gives, like if you guys are working for the audience, they are giving you so much love for all these years, right? But when I check the number of awards, I haven't seen यार देखो that. तुम क्या अभी सैड कर रही हो यार, ये ना एकदम तो वही बात बोल रही है जो मैं सुबह बोल रहा था, वही बात कर. सीरियस. सुबह क्या कह रहे थे, अभी मुझे सर है ने नहीं तो मालूम. बोला. नहीं, मैं Let's form a group and let's fight against this now. No, what I was saying is कि, you know, comedy is something that everybody accepts is the toughest to do. It's the most toughest form of whatever. But जी. उसको प्यार बहुत मिलता है, रिस्पेक्ट कम मिलती है. कि कॉमेडी एक्टर्स को हमेशा कॉमेडियंस ही देखा जाता है, बट वो वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है. आप ऑस्कर्स भी देख लीजिए तो कभी किसी एक्टर को कॉमिक रोल के लिए, यू नो, ऑस्कर नहीं मिला है या उसको नॉमिनेट नहीं किया है, या यहाँ पर भी एक कैटेगरी बना दी है, बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल. हाँ, It doesn't that's the necessarily. category. Best actor is a best actor. He can be doing comedy, tragedy, or action or whatever. but वो दूसरा नहीं होता है. हाँ, best actor in a tragic role नहीं है, but best actor in a comedy role है. कॉमेडी रोल डाला गया हाँ. because they wanted to include it. Otherwise सपोर्टिंग में बहुत वो आई डोमिनेट थिंक होता सर था. सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि वो पहले एक टाइम होता था ना जब वो कहते हैं कि 10 मिनट का कॉमेडी आता है पिक्चर में, कॉमेडियंस को लेके एज हीरो पिक्चर नहीं बनती थी, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं किया. उन्होंने बोला बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल तो इधर ही है, बट वो वर्ल्ड ओवर है. तो कॉमेडी एक ऐसा जॉनर जो मुश्किल है, प्यार बहुत मिलता है लेकिन थोड़ी इज्जत उसकी उतनी नहीं होती. तो ये बदलाव कैसे आएगा? वो पता नहीं. ग्रुप वही मैं बोल रही हूँ, आपने तो हर तरह के रोल किए हैं. अरे तो करे क्या? सर मैं आपको ये अवार्ड आज देना चाहता हूँ मेरी तरफ से. पॉपकॉर्न अवार्ड. 5 किलो सिला हुआ पॉपकॉर्न. Let's just clap. It gives me a chance to speak, and this is without salt, by the way. And no caramel also. खाना मत. हाँ तो ये अच्छा है, सिल के दिया है तुमने. ही देखो सिला हुआ नहीं था तो गिर रहा है बार बार. So good. On a very serious note. Yeah. अभी तक तो चलो ठीक है वो जो भी चल रहा था, but I think these are apples and oranges. I don't think that anybody who works and is happy with their work, जी. and that you cannot, of course, I mean it's what's an award? It's a validation of your work, right? जी, हाँ. Now the validation, if that pleases you more, I'm not saying validation is bad or anything, but the work you do is more important than the validation. That is what it is. It's as simple as that. You can get nominated. So I think I have never ever felt that how many awards, though I can count. हाँ. I've got 2 awards. But national award you got. But there's nothing to feel that, you know, why I was not. You wanted to act or you wanted to collect award. Why did you come into this field? What's your basic motive? My motive was that I wanted to be on the film set, to enjoy that, to act. Correct. That was my first thing.
I did not come here कि boss मैं जाके उधर award collect करूँ. Then I would have done something else. And there are ways and ways to do it. We all know it. Simple. No, but on that note, thank you so much for giving your time and giving such a superb show. Like maybe I'm repeating, but I genuinely enjoyed it. I know I'm very loud. See, that's with the my award. expression, That's the award. That's the award. सच में बहुत सही में अच्छा लगा है. मतलब No, but really, we are happy seeing your reaction. Yeah. बहुत मजा देखे सर अभी थर्ड एपिसोड ही देखा 4:30 तो बाद दूसरा पूरा देखना था, दिखाया नहीं. हाँ मैं मतलब देख लूंगी वो तो बाद में, but thank you so much. Don't tell anyone the end. so huh? much.